Good evening, students. So, today I will share something about how to prepare for your exam. As you are third year BDS students and preparing for your exam, so I will share some information that will cover all your subjects, and maximum part of the information will cover only the general surgery subject. Hello, good evening. I am Dr. R.K. Dua and I will share something that you must be knowing but you do not pay attention to that. So आप सबको पता है क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में है, तो आपने क्या करना है? You simply see the question that you know the answer. That's all. उससे ज़्यादा आप कोई एफर्ट नहीं लगाते. Very few students who pay something into that question so that they can get the reward of that attention. So until unless you are very much aware that you have to pay some attention to the question. So what is that attention that you have to pay? First you sort out the question that you know very well. One side, 1, 2, 3 you know very well. These are the three. Then in the middle part, the answer of which you know plus minus 50-50, and then in the end the answer either you don't know or very minimal. You are very much confused about the answer of those questions. So now comes the first one. पहले पे आ जाइए आप. 3 या 4 क्वेश्चन है, सीक्वेंस उनकी कोई भी हो सकती है. यू जस्ट टिक मार्क दोज क्वेश्चंस which are very well known to you. So now don't keep on writing everything that you know about that topic. वो नहीं करना आपने. आपने क्वेश्चन को पढ़ना है बड़े ध्यान से कि पूछा क्या गया, आपसे क्या पूछा गया, आपने क्या आंसर देना है. तो वो आंसर के लिए आपको पहले ये सोचना होगा कि आपसे क्या पूछा गया है. एक वन थिंग, क्वेश्चन के मार्क्स अलॉटेड जो हैं वो कितने हैं, ये दो चीज़. सो मार्क्स के ऊपर ही आपका आंसर का साइज डिपेंड करता है. सपोज़ आपका क्वेश्चन दैट कैरीज 10 मार्क्स, 7 और 8 मार्क्स, you can write 1 page or 1.5 page, maximum 2 pages if you are drawing a flow chart or a big diagram. So your answer should not cross more than 1.5 page, even for a lengthy question, because nobody wants that how elaborately you know the subject or that topic. Examiner is interested only in that what was asked in the question, आपसे क्या पूछा गया और आपने उसका आंसर किस तरह से दिया. सो आपका पहला होगा कि जो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, सपोज हम शॉक लेते हैं, आपसे पूछा गया डिफाइन शॉक, या डेफिनेशन लिखनी शॉक की. सो व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, आपने वेरियस कॉज लिख देने हैं. Then how you will diagnose and manage the hypovolemic shock. First is the definition, second heading will be the causes, and in between the definition, where the definition ends and the causes starts, there should be a gap of 1 line, and there should be underlining or different color pen should be used for your definition and causes. That means 2 separate headings. And if possible, you can write the causes 1, 2, 3, 4, 5. That's all. Then comes the management, diagnosis and management. So whenever the question of diagnosis comes, everybody starts writing this investigation, this, that. All kind of investigation CT तक पहुंच जाते हैं जहाँ CT की ज़रूरत नहीं है.
सिंपल पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हुआ, गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेशेंट वाज नॉट एबल टू टेक ओरली and there was nobody to bring the patient to the hospital. That's why the patient was going into shock. सिंपली आपने इसमें फ्लूइड रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेस करने हैं, न्यूट्रिशन आपका पेशेंट का मेंटेन करना है, दैट्स ऑल. आपको फिर भी लगता है कि कुछ ऐसा कॉज हो सकता है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो सकती हैं, देन यू हैव टू स्टार्ट विद द अल्ट्रासाउंड. सो अभी अल्ट्रासाउंड और इंसीटी और कोई इन्वेस्टिगेशन से पहले भी आपने कुछ करना होता है, जिसके लिए आप अपनी क्लिनिकल क्लासेस जाते हैं, प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करते हैं. दैट इज़ योर साइंस एंड सिम्टम्स. यू हैव टू आस्क सम फ्यू बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट. So then you have to find what are the various symptoms the patient is having, what are the various signs the patient is having. Now comes the examination. What is the blood pressure of the patient, facial structure of the patient, how the patient is lying, how the, you can say, the forehead sweating will be there, patient will be anxious, sunken eyes, elasticity of the skin is lost, blood pressure is low, pulse rate is very high. So these are the things that if you write, and after that you start your investigations, and on confirming your diagnosis on the base of history, signs, symptoms, your then investigations, and combine all these, make a diagnosis that the patient is suffering from hypovolemia, and the cause of hypovolemia was severe loss of fluid from the body because of loose motions and vomiting. And in history, if you ask from the patient, patient will give a history that yesterday he had a dinner some outside, so following that he was not feeling good, and in the night he started having vomiting and the loose motion. Simple. If somebody who is working as a labor in a hot humid weather, so that can also go into shock if the good quantity of fluid to drink is not available and he is working for a very long time, that patient can also go into shock. So ये सब चीज़ें जब आप एक कंबाइन करके एक अपना आंसर बनाएंगे, तो यू कैन ईजिली राइट द डेफिनेशन, कॉजेज एंड डायग्नोसिस, एंड देन द ट्रीटमेंट. ट्रीटमेंट क्या है? फ्लूइड लॉस हुआ, फ्लूइड देना है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ, इलेक्ट्रोलाइट देना है, न्यूट्रिशन लॉस हुआ, अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है. सबसे मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको लगता है कि पेशेंट इज़ गोइंग इनटू द शॉक, इमीडिएट थिंग दैट यू हैव टू डू इज़ मेंटेन द इंट्रावेनस लाइन, because the blood pressure, if falls further down, you will not be able to find the veins which were previously visible. So in that case, immediately apply 18 bore or 16 bore cannula. Along with that, you have to provide oxygen to the patient, and then start fluid and raise the foot end of the leg. That's all. अगर आपने इतना लिख दिया, 90% 80% मार्क्स नहीं, कहीं भी नहीं गए. लेकिन आपको कई बार ये इम्प्रेशन रहता है कि 4 पेज लिख दूंगा, नंबर ज़्यादा मिलेंगे. कुछ भी ज़्यादा नहीं मिलेगा. अगर ये आपने 1.5 पेज के अंदर ख़त्म कर दिया, एंड दैट to in a very neat and clean way, examiner just have to scan 1 2 3, okay, these are the symptoms, these are the signs, this was the investigation that is the student have done, and on finding, these were the finding, on the base of that student made the diagnosis of gastroenteritis and replaced the fluid, electrolyte and the nutrition. Now the patient is okay, you are 100% correct. Similarly, you give your answer in a viva, you will get 90% marks. आपसे कोई भी इतना हाई फाई ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछता. आपके लेवल पे आपको इतना आना चाहिए कि यू आर एबल टू डायग्नोज द बेसिक थिंग्स, यू आर एबल टू suggest to the patient that you have to urgently seek medical attention. So कभी भी इस इम्प्रेशन में मत रहना कि आप ज़्यादा लिखोगे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, कम लिखोगे कम मार्क्स आएंगे.
मार्क्स का लेंथ ऑफ आंसर से कोई लेना देना नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव रिटन ऑल द पॉइंट्स विच आर एक्सपेक्टेड इन दैट आंसर। जो उस आंसर के अंदर मेन पॉइंट्स होने चाहिए, जो अगर वो आपने क्लियरली लिख दिए, नीटली विजिबल 1 2 3 4 5, तो आपको पेज भरने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली इन केस ऑफ वाइवा, जब आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, आपके पास की ट्यूब होती है, आप हाथ नहीं लगाएंगे, सर दिस इज़ आर्टरी फोर्सेप, दिस इज़ सीजर, दिस इज़ एलिस, दिस इज़ बैबकॉक, दिस इज़ दिस। सो उस रटे हुए अंदाज में जो आप बाहर से किसी से पूछ के आए हैं, आप सीजर को आप आर्टरी फोर्सेप बता रहे हैं। सो व्हेन एग्जामिनर आस्क व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस आर्टरी फोर्सेप, यू से सर हीमोस्टेसिस। वो हीमोस्टेसिस कैसे करते हैं? सर हम इससे आर्टरी पकड़ेंगे। बेटा ज़रा ये पेपर पकड़ के दिखाओ ज़रा। द मोमेंट यू स्टार्ट होल्डिंग द पेपर, इट विल नॉट होल्ड द पेपर, इंस्टेड इट विल कट द पेपर। पेपर तो कट हो गया और आपने आर्टरी ली और उसको और काट दिया। पहले ही आर्टरी एक स्टम्प से बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया था, आपने उसको काट दिया। तो ये मिस्टेक जो आप करते हैं, सिमिलरली निडल होल्डर और आर्टरी फोर्सेप्स के अंदर देखने में तो दोनों एक से लगते हैं, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपने देखा ही नहीं कि उसके अंदर जो फल्क्रम जो है और जॉज का जो साइज़ है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉ, थिकनेस ऑफ द जॉ, सिरेशंस, दीज आर द थिंग्स दैट डिफ्रेंशिएट आर्टरी फोर्सेप्स विद द नीडल होल्डर। वो आपको देखना है जब आप हाथ में उठाएंगे, इंस्ट्रूमेंट को ओपन करेंगे, कंपेयर दीज आर द टू जॉज एंड दीज आर द रैचेट इज देयर और नॉट। If ratchet is not there, the only thing that we use in the surgery, in the ratchet is not there, commonly used in the general surgery is the scissor, whether it is a straight scissor, curved scissor, dressing scissor, suture cutting scissor, whatever kind of scissor is, that will not contain. Second instrument is used by the ENT surgeon, that is a Meigel's forceps used for packing into the nasal cavity. So that does not have any kind of locking mechanism. So you should be very careful holding the equipment, holding the tube in your hand. See all the structures, all the similarities it can have with any other equipment or the instrument. जब आप ये सब कर लेंगे तो आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स होना, पास होना कोई ऐसा हार्ड एंड वो नहीं है, सॉरी, easily you can secure good marks just by paying some attention to the answer that you are writing in the exam. कभी भी ये मत सोचिए कि ज़्यादा नंबर लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं. So these are the basic things that I want to share with you. Hope all these things will help you in writing your answer and securing more marks. So in near future, before your exam, I will also share the various topics that are the basics of the surgery, like cyst, sinus fistula, inflammation, shock, gangrene. All these things are the basic things. And if time permits, I will also put some videos on the specific like thyroid and the parotid and other topics which are in your syllabus. Thank you very much and keep watching these videos, and if you like, you can share with your friends. Thank you very much.